नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटियाओ। माई सेल्फ डॉक्टर हिना मेवाड़ा, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ प्रसूति एंड स्त्री रोग, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ, वुमेन्स यूनिवर्सिटी. In today's session, I am going to discuss about normal labor, definition, stages, false and true labor pain. So first of all, definition: the series of events that take place in the genital organ in an effort to expel the viable product of conception out of the womb through the vagina into the outer world is called labor. The normal labor is also termed as eutosia. Any deviation from the definition of normal labor is called abnormal labor or dystocia. Delivery is called expulsion or extraction of a viable fetus out of the womb. It is not synonymous with labor. Delivery can take place without labor, as in elective cesarean section. So what is normal labor? Labor is called normal when it is fulfill the following criteria. फर्स्ट क्राइटेरिया इज स्पॉन्टेनियस इन ऑनसेट, मतलब जो लेबर है वो स्पॉन्टेनियसली ऑनसेट हुआ हो उसका, एंड एट टर्म और टर्म पर ऑनसेट हुआ हो, विथ वर्टेक्स प्रेजेंटेशन, विदाउट अनड्यू प्रोलोंगेशन, मीन्स जो स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है लेबर का उससे ज्यादा प्रोलोंगेशन ना हो, नेचुरल टर्मिनेशन विथ मिनिमल एड, and without having any complication affecting the health of the mother and baby. Now pre-labor or pre-monitory stage. Pre-labor or pre-monitory stage begin 2 to 3 weeks before the onset of true labor pain in primary, and in multi it begin a few days before the labor. The features of pre-labor is lightening, cervical changes and appearance of force pain. In lightening, presenting part sinks into the true pelvis due to the active pulling of the lower pole of the uterus around the presenting part. Because of sinks of presenting part, fundal height is further diminished, so pressure is minimized on the diaphragm, and mother experience a sense of relief from the mechanical cardiorespiratory embarrassment. Also, frequency of micturition and constipation occur due to the mechanical factor, pressure by the engaged presenting part. It is also called welcome sign. Now cervical changes. Few days prior to the onset of labor, cervix become ripe. A ripe cervix is soft, effaced 80%, length is less than 1.5 centimeter, admits a finger easily, and it is dilatable. See here, see in this diagram, this is 0% effaced, 50% effaced, and 100% effaced. Now appearance of false pain. The false pain appear before the onset of true labor pain in primary 1 to 2 weeks before, and in multi few days before. The pain is dull in nature and confined to lower abdomen and gyrn region. Pain is continuous and not associated with hardening of the uterus. The pain pain is continuous, and it no any effect on the dilatation of the cervix. It usually relieves by enema and sedatives, and false pain occur mostly in the primary patient. Now true labor pain. In true labor pain, uterine contraction at regular interval is occur. The frequency of uterine contraction increase gradually, and the intensity and duration of contraction increase progressively. Associated with the so means cervical mucus plug mixed with blood, progressive effacement and dilatation of the cervix, descent of the presenting part,
formation of the bag of forewater. It is definite sign of the true labor, and true labor pains is not relieved by enema or any sedative. This is the forewater bag. Now, stages of labor. There are 4 stages of labor. First stage, which is also called cervical stage, it starts from full dilatation of the cervix and end with expulsion of the fetus from the birth canal. First stage in primary, the duration of first stage in primary is 12 hours and in multi is 6 hours. Now second stage start from full dilatation of the cervix and end with expulsion of fetus from the birth canal. Propulsive phase start from the full dilatation up to the descent of the presenting part to the pelvic floor, and expulsive phase is distinguished by maternal and bearing down effort and end with delivery of the baby. The duration of second stage in primary is 2 hours and in multi 30 minutes. Third stage begin after expulsion of fetus and end with expulsion of placenta and membrane. It is the duration of third stage is 15 minutes in both primary and multi. The fourth stage, which is also called observation stage, are start from after expulsion of the afterbirths. In this stage, general condition of the patient and the behavior of the uterus are to be carefully monitored, and the duration of fourth stage is 1 hour. Now, clinical events. Clinical events in first stage of labor is dilatation and effacement of the cervix and formation of lower uterine segment. Dilatation, actual factors which are responsible for dilatation of cervix is uterine contraction and retraction, bag of membrane, and fetal axis pressure. Uterine contraction and retraction. Longitudinal muscle fiber of the upper segment are attached with circular muscle fiber of the lower segment and upper part of the cervix in a bucket holding fashion. Thus, with each uterine contraction, not only the canal is open up from above down, but it also becomes shortened and retracted. Polarity of uterus: when upper segment contract, retract and pushes fetus down, the lower uterine segment and cervix dilate in response. तो इस डायग्राम में आप देख रहे हैं ये लॉन्गिट्यूडनल मसल फाइबर है और ये सर्कुलर मसल फाइबर है. ये बकेट होल्डिंग फैशन में अरेंज होते हैं. जैसे ही यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं तो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कैनाल ओपन अप होती है और ये जो फाइबर है वो अपवर्ड पुश होते हैं, तो इससे डायलेटेशन होता है. इसको पोलैरिटी ऑफ यूटेरस कहेंगे. Uterine contraction generate hydrostatic pressure in the forewater that in turn dilate the cervical canal like a vase. इस डायग्राम में ये फोरवाटर है और ये फोरवाटर ईच यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के साथ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट करता है और इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से फर्दर डायलेटेशन होता है. Third factor is fetal axis pressure. Contraction of circular muscle of the body of uterus. This allow the fundal contraction to transmit through the podalic pole into the fetal axis and hence allow mechanical stretching of the lower segment and opening up of the cervical canal. इन अगर फिटस की लॉन्गिट्यूडनल लाई है तो लॉन्गिट्यूडनल लाई होने की वजह से जब सर्कुलर मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये सर्कुलर मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के कारण फंडल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो ट्रांसमिट होते हैं पॉडेलिक पोल से फिटल एक्सिस की तरफ, जिसके कारण मैकेनिकल स्ट्रेचिंग होती है लोअर यूटेराइन सेगमेंट की
और सर्वाइकल कैनाल ओपन अप होती है. Now effacement of cervix. Muscular fiber of cervix are pulled upward and merge with the fiber of the lower uterine segment. In primi, effacement precedes dilatation of the cervix, and in multi, both occur simultaneously. जैसे जैसे अपर यूटेराइन सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं और जो सर्कुलर मसल ऑफ फाइबर्स हैं वह अपवर्ड पुल होते हैं और मर्ज हो जाते हैं लोअर यूटेराइन सेगमेंट में, वैसे वैसे कैनाल का इफेसमेंट होता जाता है. यहाँ इस डायग्राम में देखिए, ये नॉन इफेस्ड सर्विक्स है, धीरे धीरे इसका इफेसमेंट होता जाता है, मतलब सर्विक्स थिन होती जा रही है और अल्टीमेटली कंप्लीट इफेसमेंट हो जाता है. Now formation of lower uterine segment. In labor, it is bounded above by the physiological retraction ring and below by the fibromuscular junction of cervix and uterus. Formation of lower uterine segment are from the isthmus of the non-pregnant uterus. मतलब जो फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग है वो लोअर यूटेराइन सेगमेंट और अपर यूटेराइन सेगमेंट के जंक्शन पर होती है. तो फिजियोलॉजिकल रिट्रैक्शन रिंग से अबोव बाउंडेड होगा लोअर यूटेराइन सेगमेंट और बिलो बाउंड होगा सर्विक्स एंड यूटेरस से, और ये स्टेमस से डेवलप होता है. ये 7.5 से 10 सेंटीमीटर हो जाता है जब ये फुली फॉर्म होता है, और सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में ये सिलेंड्रिकल हो जाएगा. द वॉल बिकम ग्रेजुअली थिन ड्यू टू रिलैक्सेशन ऑफ द मसल फाइबर टू अलाउ elongation. The muscle fiber are drawn up by the muscle fiber of the upper uterine segment by contraction and retraction during labor, and descent of the presenting part cause further stretching and thinning out of bole. Now events in second stage. Descent and delivery of fetus through the birth canal occur during second stage. Volume of the uterine cavity is reduced due to the escape of large amount of amniotic fluid in second stage. Uterine contraction and retraction become stronger. Uterus become elongated during contraction while the anteroposterior and transverse diameter are reduced. Delivery of the fetus due to the downward thrust offered by uterine contraction supplemented by voluntary contraction of abdominal vessel. Endowed with due to retraction, the fetus is gradually expelled from the uterus against the resistance offered by the pelvic floor. तो सेकेंड स्टेज में क्या क्या इवेंट्स होते हैं? डिसेंट होगा और डिलीवरी होगी फिटस की. सबसे पहले जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो एस्केप आउट होने की वजह से यूटेराइन कैविटी का वॉल्यूम कम हो जाता है. यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाते हैं और यूटेरस जो है वो इलोंगेटेड हो जाता है, जिसके कारण एंटेरोपोस्टीरियर और ट्रांसवर्स डायमीटर जो है वो कम होता जाता है. रिड्यूस होने की वजह से फर्दर फिटस की डिलीवरी डाउनवर्ड थ्रस्ट के कारण होती है, जो कि यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन के कारण होती है और साथ में बियर डाउन इफर्ट के कारण. नाउ थर्ड स्टेज इवेंट. थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा सेपरेट होता है, उसके बाद सेपरेशन के बाद डिसेंट होता है प्लेसेंटा का और अल्टीमेटली इसका एक्सपल्जन होता है. जो प्लेन ऑफ सेपरेशन है प्लेसेंटा का वो स्पॉन्जी लेयर ऑफ डेसिडुआ होती है. सेपरेशन क्यों होता है? रिट्रैक्शन ऑफ मसल्स के कारण, यूटेराइन मसल की रिट्रैक्शंस के कारण प्लेसेंटा डिटेच होता जाता है यूटेराइन वॉल्व से. Methods of separation are in two ways, central and marginal. Central separation में प्लेसेंटा सेंटर से सेपरेट होता है यूटेराइन वॉल से. इसकी वजह से रिट्रोप्लेसेंटल हिमेटोमा होता है और उसके वेट के कारण फर्दर डिसेंट होता है और अल्टीमेटली
सेपरेशन होगा। मार्जिनल सेपरेशन जो है वो प्लेसेंटा की एक मार्जिन से होता है, जिसके कारण ब्लड पहले ही सारा निकल जाता है, देन फर्दर कंप्लीट सेपरेशन होता है। Separation of membrane, uterine contraction are and mostly by weight of the placenta. After complete separation of placenta, it is forced down into the flabby lower uterine segment or upper part of the vagina by effective contraction and retraction of the uterus. Thereafter, it is expelled out by either voluntary contraction of abdominal vessel or by manual procedure. Mechanism of control of bleeding during during and after separation of placenta is by occlusion, thrombosis, and apposition of the wall of the uterus. Occlusion of arterial wall is occurred due to the complete retraction. So thank you for listening me. This session is powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Hope you all are satisfied with my session. If you have any query, please write in comment box, so I will resolve it. Thank you so much.